नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को राधा स्वामी, मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के शुभ विचार के साथ। कर भरोसा सतगुरु नाम का, धोखा कभी नहीं खाएगा। हर मौके पर सतगुरु तेरे घर सबसे पहले आएगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास के स्पेशल सवाल जवाब सत्र कार्यक्रम में संगत ने अनेकों प्रश्न पूछे। देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते, इसीलिए पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक हमने आपको RSSB का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। Thank you, Babaji. Thank you for showering your grace to every one of us, and I feel blessed to ask, to be in front of you. My first question is how to develop patience in personal and professional life. Better life is a learning process. These are not things which somebody can teach you. These are not things that somebody will give you. These will come with experience. The saying goes that experience teaches the old to be young and the young to be old. इस वक्त हमारा दायरा थोड़ा सा छोटा है बेटा। उस छोटे से दायरे में हम अपना वजूद भी बना के रखते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे ऊपर निर्भर हैं, हमारी इम्पोर्टेंस है। मगर जैसे जैसे दायरा खुलेगा ना, वो रियलाइजेशन आती है कि हम तो कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे इंसान अपनी असल औकात को देखता है, असलियत को समझता है कि ये तो एक समुंदर में एक छोटा सा कतरा है, तो अपने आप ईगो खत्म हो जाती है। बेटा ईगो खत्म हो जाती है तो हम क्यों गुस्सा करेंगे किसी के साथ, क्यों इम्पेशेंट होंगे, फिर हम प्रेम और प्यार से चलेंगे ना। तो अपनी असलियत की पहचान की बात है। जैसे जैसे असलियत की पहचान होगी ना, अपने आप ये सब क्वालिटीज बीच में आ जाएंगी। Babaji, my second question is how to react in a situation when someone fat shames you in front of everyone. बेटा ये तो दुनिया में होता रहता है बेटा। कैन वी चेंज द वर्ल्ड? इतने इतने बड़े महापुरुष आए हैं, उन्होंने कभी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमें क्या हिदायत दी कि उसके हुक्म में रहो, उसके भाने में रहो, तेरा पाना मीठा लागे। ठीक है, तो हम कहाँ से बदल पाएंगे बेटा? दो अच्छा कहेंगे दो बुरा कहेंगे। बेटा आप अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि चाहे जो मर्जी का हो, आप अपने लक्ष्य से मत हटें, आप उस लक्ष्य को आगे लेके बढ़ते रहें बेटा। And please shower your grace by giving Namdan soon. Rashma. Babaji, my first question is, how can we remain contented in every situation? Sir, sometimes you get mentally upset, so... Beta, the world cannot work on your whims and fancies. Okay? Now, having come here, we've got the mind attached to us. Mind is going to want a lot of things. But if everybody's wishes were answered, there'd be chaos in this creation. So everybody's wishes cannot be answered. If you sort of attach yourself to the fulfillment of your wishes, then you are only looking at problems and pain. So beta, effort is in our hands, the results are not in our hands. Results are in His hands. If He deems it fit, He will give us. If He thinks that no, we need to try harder, He will want you to work harder. So don't attach yourself to the results, you focus on your effort. Contentment, beta, will not come with fulfillment of wishes. Contentment will come when you go beyond all this. Okay, there's no question of fulfillment. Beta, wishes can never be fulfilled. This mind is a bottomless well. Whatever you give it, it will demand more. Now we have to, beta, go beyond all this, where all these things become pointless. Okay, when you do your meditation and you take your awareness and your surat above all this, they become meaningless, beta. Then you don't, then you won't run after these things. Babaji, there was a time when I was a student, I was very disciplined. I used to dedicate each and every minute to my studies. But after my studies were over, I started working. So the time changed. I wasn't able to utilize every single minute of my life. So as a student,
our only focus is on studies. Every single minute we want that we only should study, study, study. No other thoughts. But Babaji, how now we realize that our ultimate goal is to reach the God and to be with Him. So how can we utilize every single minute to connect to Him and be closer to Him? Because we also have to do worldly duties. We have to focus in spite and despite everything. We are looking for ideal circumstances. Nobody has ideal circumstances, beta. You have to make the circumstances ideal by your hard work. So don't think that when everything is okay, when I have this, then I'll do, then you won't need it. So 24 hours in the day, sufficient time, pay attention to your work, to your family and to your meditation, beta. Keep that balance in life. आज के सवाल जवाब वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।